Hello, hello, hello.
with us very shortly.
The chief guest is escorted by our pilots Cadet Janvi Gupta and Cadet Anushka Rudola. I request Honorable Professor Dr. Mangesh Karad Sir, Executive President and Vice Chancellor MIT-ADT University, Pro Vice Chancellor Dr. Anand Chakradesh Sir, and Principal of MARIT Mr. Subodh Devgavkar Sir to accompany our chief guest Major General V.D. Chaugale Sir. Guard of Honor is being given by OG Cadet Punit Malhotra. I request you all to remain standing in the honor of the national flag and for the national anthem.
Cadet Puneet Malhotra will lead the platoon of Manit cadets along with Cadet Abhishek Shinde and Cadet Ajay Kalbor. Every year, the campus of MIT-ADT University resounds with the brilliance of thudding feet and magnificence of march past of cadets and students. March past is all about synchronizing and teamwork. Marching in a contingent demands a lot of alertness and unspoken coordination. The drumbeat and high-pitched voice issues command. The synchronized swing of arms and the sound of thudding feet stir something within us. See the tremendous efforts of our cadets marching and playing the drum as they march on, determined to do their best and convey a message to the world that they would always carry on despite the innumerable challenges. A lot of efforts have been put in by Thorat sir and Thapa sir in training these cadets. Our commander, Cadet Praveen P. Shinde. Here, we are fortunate and very proud to claim that we have maximum number of girl cadets studying in any maritime institute in the country. And is led by Cadet Kumari Neha. Following, we have Troop 2, led by Cadet Pranav Bor. Next up, we have Troop 3, led by a Cadet Akshay. For the first time in our campus, we have a squad of NCC cadets who are led by Cadet Mrutyunjay Chatole.
Last but not the least, we have a man at band squad led by Cadet Pratik Singh. We can see the amazing symmetry and coordination of all our platoons today. A tough task that they have handled admirably and with grace and ease. They definitely deserve a round of applause for their brilliant and energetic performance. Let's give them one more huge round of applause. A very good morning to all of you. On behalf of MANET and MIT-ADT University, we would like to welcome you all for India's 75th Independence Day celebration. Today, we are privileged to have with us our chief guest, Major General V.D. Tsaugale, Param Vishesh Seva Medal and Vishesh Seva Medal, our Executive President and Vice Chancellor, Honorable Professor Dr. Mangesh Karat Sir, Pro Vice Chancellor Dr. Anand Chakradev Sir, Registrar Dr. Mahesh Chopre Sir, and Director ICT and Management Professor Dr. Sunita Karad Ma'am. We also have with us on the stage the Principal of MANET, Professor Subodh Devgaonkar Sir. I would also like to welcome all other dignitaries, deans, directors, principals, HODs, and faculty members from all the institutions on and off the dais who have gathered here for the celebration of this cherished day of our great nation. This momentous day, that is 15th August in 1947, was a golden movement in Indian history, the remembrance of which fills every Indian with a feeling of patriotism, as we all feel bound by a common thread of nationalism. Freedom has not come easy. Many lives were sacrificed in the quest of freedom. So to start here, we have a performance by our NCC cadets. Let's pay tribute to our brave hearts.
Thousands laid down their lives so that the country breathe this day. Their sacrifice is Azadi का अमृत जय हिंद। फौजी के रुतबे से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता, फौजी की शान से बड़ी कोई शान नहीं होती, और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। कैप्टन विक्रम बत्रा was an officer of Indian Army. He was posthumously awarded the Paramveer Chakra, the highest military decoration of Republic of India, for his actions during the 1999 Kargil War. Captain Batra was well known in India for using the slogan "Ye Dil Mange More" as his signal to communicate the mission success, and he didn't stop after winning the point 5180 at Tiger Hills, and took the responsibility to lead the unit and hoist the flag for the toughest point 4875, and was martyred during the recapturing of the point. But he proved his slogan "Ye Dil Mange More." His one of the best motivational line was, "A soldier live by chance, love by choice and kill by profession." दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हंसी सनम नहीं होता। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हंसी सनम नहीं होता। हीरो में सिमटकर सोने से लिपटकर मरते हैं कई, हीरो में सिमटकर सोने से लिपटकर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। दुर्गे माता की जय। Let's pay tribute to our brave hearts. Captain Manoj Kumar Pandey, Param Veer Chakra. Major Anvi Sood, Shaurya Chakra. Major Sudhir Kumar Walia, Ashok Chakra. Captain Saurabh Kalia, Paramveer Chakra. Captain Vikram Batra, Param Veer Chakra. Lieutenant Kiran Shekhawat, Naval Officer. Second Lieutenant Arun Khetarpal, Param Veer Chakra. Major Mohit Sharma, Paramveer Chakra. Let's have a big round of applause. बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कि भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो
जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण में उतार दो। आरंभ है दया का भाव, या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव, या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम सोच लो। या कि पूरे फाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। केसरी हो या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना Way to start a celebration. Let's give them applause. तिरंगा ही आन है, तिरंगा ही शान है, तिरंगा ही हम हिंदुस्तानियों की पहचान है। विश्व भर में भारत को प्यार करने वाले, लोकतंत्र को प्यार करने वाले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। The ardor of freedom did not begin from the salvation of the British Empire. It began from the time when Chhatrapati Shivaji Maharaj was the first person who not just gave the idea of Swaraj, but also built an empire on it. He boosted the confidence of local warriors known as Mavras, whose valor and self-respect had been suppressed by repeated invasions, loots, plunder, and massacres by foreign invaders. The spark for the same Swaraj led to the birth of freedom fighters like Netaji Subhash Chandra Bose, Shri Lala Lajpat Rai, Shahid Bhagat Singh, and many more. The voice they raised against violence and injustice done to the Indians has gifted us with freedom today. Azadi ka Amrit Mahotsav and Har Ghar Tiranga campaign is an initiative of the Government of India to celebrate and commemorate 75 years of independence and its glorious history of its people, culture, and achievements. Respected sir, I'm proud to share with you that as a part of this Har Ghar Tiranga campaign, MIT University has distributed 1,000 Indian flags on the occasion of the 7th Foundation Day of our university. This Mahotsav is dedicated to the people of India who have not only been instrumental in bringing India this far in its revolutionary journey, but also hold within them the power and potential to enable Prime Minister Shri Narendra Modi's vision of activating India 2.0, fueled by the spirit of Atmanirbhar Bharat. Let's begin this celebration with a welcome speech by Cadet Hussain Kanchwala, Semester 2. Good morning, everyone. I would like to extend a warm welcome to everyone present out here. I'm no bird, and no net ensnares me. I'm a free human being with an independent will. It gives me immense pleasure to welcome the dignitaries on and off the dais, faculty members, students, parents, and all staff members. On this auspicious day, among us, we have our chief guest, Major General V.D. Chowgule Sir, PVSM, VSM, and Honorable Professor Dr. Mangesh Karaj Sir, Executive President and Vice Chancellor,
MIT-ADT University. A glorious day that marks the end of the British rule. The Indian Independence Day establishes and cherishes its freedom on 15th of August every year. While there's a lot what we know about India's freedom struggle is through books, movies, and histories, it is important to acknowledge the hard work and dedication that went into earning our freedom. Indian history speaks of the thousands of rallies, fights, and plans made against the British. Some were successful while some weren't, but this sets an example that some wars can be won with non violence. And all of these things make us value the freedom we have today. They conspired against us through the divide and rule policy and slowly gained control over the country. The people of our country, being innocent and ignorant, were easily deceived by the Britishers. We became cheap slaves to the British government and thus they ruled us for many years. Later on, some eminent personalities such as Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Bhagat Singh, and many more realized that we should fight for our rights. Following the advent of the Britishers, every Indian, irrespective of their caste, class, religion, and gender, came together to fight against the oppression of the Britishers. We portrayed great unity and made it very clear. No caste can divide us, no laws can separate us, no colors or creed can decide our future because we are the child of one mother. Lastly, I would also like to draw your attention to how irresponsible and ignorant we can be. As we all rightfully know, we celebrate our Independence Day with a lot of excitement and handheld flags. But the following morning, it is extremely disrespectful and breaks my heart to see our flags unintentionally being disrespected. We all should make conscious efforts that we are not doing anything like this and kindly spread the word for the same. I would like to end by quoting the golden words of our former Prime Minister, Pandit Nehru ji. At the stroke of the midnight hour, when the world shall sleep, India shall awaken to freedom. I once again welcome our chief guest, Major General V.D. Chogle, sir. It's an honor to have you here, sir, today. Thank you. Thank you, Hussain, for that wonderful welcome speech and for that insightful advice. We are privileged to have with us Major General V.D. Chogle, sir. Now, I would like to call upon the dais Cadet Akshat Baliga from Semester 2 to introduce our chief guest. Good morning, all, and a very happy 75th Independence Day. It's indeed my privilege and pride to introduce to you such a distinguished and decorated personality as Major General V.D. Chogle, PVSM, VSM, as a chief guest for today. Major General V.D. Chogle is a Param Vishesh Seva Medal and a Vishesh Seva Medal awardee for his distinguished service of the most exceptional order. He is a graduate of Defence Service Staff College, Wellington, and the Long Defence Management course at the College of Defence Management, Secunderabad. He holds a master's degree in Defence Studies from Madras University, Chennai, and Master of Management Studies from Usmania University, Hyderabad. Major General Chogle was commissioned into the 6th Battalion of the Parachute Regiment in the Indian Army on 13th of March 1982. He possesses vast operational experience serving with his unit in the insurgency hotspots of Nagaland, Manipur, Assam, and 2 tenures in Jammu and Kashmir, with brief breaks of service in the desert. In addition, he served as a rifle company commander in Operation Vijay.
the Indian Army operation to evict the infiltrators from Pakistan, a super high altitude area. He commanded his battalion in Assam in active counter-terrorism operations. The performance of the unit was commended by the Chief of Indian Army while he was awarded a VSM, a Distinguished Service Medal. Sir was also responsible for protection of the McMahon line in the Indo-China border. Major General has extensive experience in ground-level intelligence at various levels of seniority. Further, he has served with the military intelligence at the Army headquarters. As a battalion and a brigade commander, he effectively led operations backed with sound intelligence to achieve results. In other assignments, he has served in a Grade 2 appointment in a contingent deployed in the deserts. He also represented the interests of the Indian Army on a pay and allowances with the Central Pay Commission. His instructional and teaching experience includes a stint at the Indian Army War College where he trained potential commanding officers in various subjects. As a commandant of the Parachute Regiment training, he trained the Indian Airborne and Special Force personnel. Finally, he served as Deputy Commandant and Chief Instructor at the Officers Training Academy, Chennai. Sir has been commended twice by the Chief of Army Staff as a battalion commander. He was awarded the Vishesh Seva Medal for distinguished service and with the Param Vishesh Seva Medal, the highest peacetime award for distinguished service of exceptional order by the President of India in 2019. It is indeed a great honor, sir, to have you here with us today. Thank you. Thank you, Akshat. Now I request Honorable Professor Dr. Mangesh Karat sir to felicitate our chief guest for today, Major General V.D. Chaugule sir. Let's give a round of applause. Thank you, sir. The highlight of every Independence Day program here on the campus has been the cultural program, a colorful and morale-boosting event that is always much anticipated. And now I've called upon Satish Kache from MIT SOE to deliver a speech on this glorious day. Hello. 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 श्री गुरुभ्यो नमः। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपटकर सोने से सिमटकर मरते हैं शासक कई, नोटों में लिपटकर सोने से सिमटकर मरते हैं शासक कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। Good morning, everybody. I am Satish Kache from Aerospace Department from School of Engineering, and today I am going to tell you all a story. It was the dawn of August 5th, 1922, and a group of 5 people were hidden in the bushes surrounding the police station of Rajamongi in the Madras province of the British rule. As the darkness set in, they came out like lions and attacked the policemen. In spite of the physical and mental pressures they were dealing with, in spite of the blood oozing out of their wounds, they managed to kill the policemen and steal their ammunition. The leader of the clan then left behind a letter, more of a warning to the Britishers, asking them to leave the province, otherwise such events would be more frequent. This very significant event
led to the rise of the Rampa rebellion of the 1922, led by the brave heart of Andhra Pradesh, Alluri Sita Ramaraju. Alluri Sita Ramaraju was not just a man, he was an emotion. He was the only hope for the tribals in the eastern Ghats of India. Alluri Sita Ramaraju was not hidden in the forests of Andhra Pradesh. He was hidden in the hearts of his people. Today, it is a privilege for us to be celebrating the 76th Independence Day. Today's reality owes its existence to the countless lives martyred for it. Friends, on this historic day, I urge you all to take up the responsibility to build our nation. If you are doing something new today, if you are learning something, if you are studying, do it for the nation. Your work here should help somebody out there in the jungles of Assam. Your knowledge should help the soldier standing right now on the borders of Jammu and Kashmir. Today, 15th August, every one of us is celebrating. What about 16th August? What about 17th? Do not let this spirit of nationalism die down. Lastly, I want to conclude with the words spoken by another great son of Mother India, Swami Vivekananda. He said, and I quote, "Give me 100 energetic young men and I shall change the fate of India." Let us all be the 100 young men and create 100 more and transform India to be the guiding light and hope for the 21st century. Thank you. Bharat Mata Ki Jai. Thank you, Satish, for that exceptional speech. In the words of Martha Graham, dance is the hidden language of the soul and mind. And today, we're about to witness a dance performance by the students of MIT Gurukul. Some call me nature. Others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil body.
खुद जी लो सबको दे दो, खुद जी लो सब दे दो, मेरे लिए जरूरी सब धरती का दिल चींटी हो या हाथी हो सब मेरे जीवन साथी हो। अंबर चिड़िया छिड़ी बातें यही दोहराती हो। अंगल रातिया और पर्वत बोल रहे हैं मिलकर सारे, ओ बोल ये और वो और सब कसम ये खाए रे टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। अगर सुन लो जज्म लेना हम तो बम जाएगा कि बहती सी है नदी जाएगा। कि कर दो रहम धरती का ये दम भी घुट जाएगा कि कुदरत की हदस नस में जहर ये बस जाएगा। ये हम सब मोहताज हैं, कैसा ये समाज है। हो हाथों में आज है, मौका ये अपना गवाए रे। टिक 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 कसम ये खाए रे। जान से प्यारा है, हर हमको हमारा है। That was so a wonderful performance. Next up, we have another dance performance by the students of MIT Junior College. नमस्ते। नमस्ते। यहाँ पर उपस्थित
सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। मैं वेदांग संतोष जाधव MIT परिवार की ओर से आप सभी को इस स्वतंत्रता दिन के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरा भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज पूरा भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और जिसके उपलक्ष्य में हम सब भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। मैं वही हूँ, हाँ मैं वही हूँ जो कुछ साल पहले आजाद हुआ था और यकीनन वो लम्हा भी सैकड़ों साल बाद हुआ था। कभी गुलाम, कभी मुगल, कभी अंग्रेज और आज समाज। शायद मैं आज भी गुलाम हूँ, इन धर्म और जातियों के बीच हर रोज नीलाम। आज 15 अगस्त, तुमने मुझे याद किया है, कल मुझसे मुंह मोड़ लोगे। आज तुमने मुझे याद किया है, कल मुझसे मुंह मोड़ लोगे। कल फिर से मेरे तिरंगे से भगवा और हरा तोड़ लोगे। इन धर्म और जातियों को तो मेरे बाद रखते, इन धर्म और जातियों को तो मेरे बाद रखते, मेरे तिरंगे में एक रंग शांति का भी है, कम से कम ये तो याद रखते। आजादी। दोस्तों, हम क्या जाने क्या है आजादी, हम क्या जाने क्या है आजादी, हमने कौन सा अंग्रेजों का हंटर खाया है। आजादी की कीमत तो उनसे पूछो जिन्होंने इसके लिए सब कुछ गंवाया है। जिन्होंने आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने अपना जीवन काले पानी में गुजारा था, जिन्हें अपना भारत देश जान से भी प्यारा था, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूले थे, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूले थे। और आजादी की कीमत उनसे पूछो जो देश के लिए सब कुछ भूले थे। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने कटा दिया पर सर अपना झुकाया नहीं। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने कटा दिया पर सर झुकाया नहीं, जिनका बेटा कभी घर लौट कर वापस आया नहीं, जिन्होंने अपनी बेटे की मौत पर भी, जिन्होंने अपनी बेटे की मौत पर भी जय हिंद का नारा लगाया था। और आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने पहली दफा तिरंगा लहराया था। सच में दोस्तों, हमने क्या किया है इस आजादी के लिए, हमने क्या किया है इस आजादी के लिए, बस पुरखों से विरासत में पाई है। और आजादी की कीमत तो उनसे पूछो, और आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने उसकी असली कीमत चुकाई है, जिन्होंने उसकी असली कीमत चुकाई है। आज मुझे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुछ शब्द याद आ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो बस एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू। मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको हम एक बार दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से, इंडिया वाले से, इंडिया वाले छीन ले हमसे, इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम, इंडिया वाले। मैं खिल जाऊं इतनी सी दिल की आरज़ू।
शुरू शुरू कर शुरू पर जहाँ भी है तू वहीं से यारा कोई कहानी शुरू तो कर की बूंदे बूंदों में चीज ही गूंजे इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में Let's cheer them up. Give a big round of applause. आयो रे शुभ दिन आयो करके दिखाऊंगा दुनिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा मैं जब से पकड़ झाड़ दूंगा तो मैं उखाड़ दूंगा जहाँ से तू आया है ना वहीं तुझे गाड़ दूंगा कमी पे आज तुझे ही पछाड़ गाड़ दूंगा गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना होंगे ये सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे Keep clapping, everyone. Keep giving a round of applause. That was an incredible performance. The rural form of dance in Maharashtra usually consists of the Lejham dance. The first Lejham performance to an international audience was presented at the 9th Asian Game, where 400 of the best Maharashtrian Lejham players gave a demonstration. So let us now call upon CBSE students to perform a Lejham act.
Let's cheer them up for their wonderful formations. Can I hear a big round of applause? Thank you for such an incredible performance. Proceeding on, let's have mid-com students who are here to showcase their talents through a skit performance. है जान हथेली पर एकदम में गवा देंगे, उफ तक भी जुबां से हम हरगिज ना निकालेंगे, तलवार उठाओ तुम हम सर झुका देंगे, सीखा है हमने लड़ने का यह तरीका, चलवाओ गन मशीनें हम सीना अड़ा देंगे, दिलवाओ हमें फांसी ऐलान से कहते हैं, खून से ही हम शहीदों के फौज बना देंगे. A very pleasant and tricolor morning to all. I am Meghal Sharma from second year BBA Midcom. And I am Ashmi Patel from second year BBA MIT College of Management. We wish you all a very happy 75th Independence Day. Being a soldier is not easy. In fact, it is one of the most challenging things to do. Their lives are full of hardships and challenges, which no ordinary person can survive. Firstly, they spend a great deal of time away from their loved ones. They communicate with their family through letters. Here, the students of MIT College of Management describing the life of Indian soldiers through a dance performance. So,
Let's welcome them with a huge round of applause. अरे भाइयों, चिट्ठी आ गई, सबकी चिट्ठी आ गई, आ जाओ आ जाओ। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। अलवारों पे अंगारों में अब जाके कहीं हमने सर ये केसरी रंग आया है मेरी ज़मीं, अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे मेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, दिल की आरज़ू। ये समय आंखों में आंसू नहीं, अग्नि लाने का है। तेरे प्रेम की बरखा पिया रे, ऐसा ये मुझको कवच दिया रे, इस राह पे कण 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 गई कांधे पे जोग का धनुष उठा के सीधी तन गई मैं, योद्धा बन गई मैं, हर सांस में आग का रंग मिला के तन मन धन गई मैं, योद्धा बन गई मैं। अब मन ये हुआ है धोनी और आंगन है रणभूमि, अब काल भी आंख में आंख न डाले ऐसी ठन गई मैं, योद्धा बन गई मैं, योद्धा बन गई मैं, योद्धा बन गई मैं, योद्धा बन गई मैं। हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी।
है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। बाहर है वो थर थर कंपते सारे, बाहर है वो थर थर कंपते सारे। एक तेरा नाम है साजा, बस नाम तेरा माँ, एक पहचान में इंद चांद मेरी तू ही जहान मेरा माँ। पेवार ना 100 वारी जान में, कुछ पेवार ना 100 वारी जान में, तेरे खुद ईमान। शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे सुजलां सुफलां मयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे। शुभ्र ज्योत्सना पुन सुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहास। Oh, what do we have here? Cadets of Manhood marching forward. For the very first time here, we have our very own cadets of Manhood. बस तेरी याद
वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ अपनी बाहें खोल जोर से मुझको गले लगा ले मुझको फिर वो प्यार दे पूरी जिंदगी है तू मेरी मोहब्बत है तेरे ही पैरों में जन्नत तू ही दिल तू जान अम्मा माँ तुझे सलाम माँ तुझे सलाम अम्मा तुझे सलाम माँ तुझे सलाम Give them a round of applause. By married cadets, which indeed gave us a thrill and patriotism. It gives me immense pleasure to call upon the dais Executive President and Vice Chancellor, MIT-ADT University, Honorable Professor Dr. Mangesh Karad sir, to address the gathering. गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल. आदरणीय व्यासपीठ और आज के चीफ गेस्ट मेजर जनरल विजय चौगुले जी, यहाँ उपस्थित सब स्कूल के, यूनिवर्सिटी के प्राचार्य, डायरेक्टर एंड ऑल अदर ऑफिस बेयरर्स, माय फैकल्टी एंड माय फ्रेंड्स. I am really delighted to be here on this occasion of the 75th anniversary of our independence, आज़ादी का अमृत महोत्सव. आज मुझे लगता है कि आज हमारे छात्रों ने यहाँ पे जो परफॉर्मेंस किए सभी स्कूल के, all of them have really ignited the feeling of the patriotism among us all. एंड हम उसमें पूरे डूब गए थे. ऐसे लग रहा था कि ये प्रोग्राम ऐसे ही चलते रहे. इतने बेहतरीन परफॉर्मेंस, इतने बेहतरीन भावना, एक लहर खड़ी हो गई. मुझे यकीन है कि हर एक के दिल में ये लहर, देशभक्ति की लहर उठ गई है. मुझे लगता है कि आज हम बहुत भाग्यवान हैं कि इस महोत्सव में हम आज यहाँ पे शामिल है. पूरे देश में ये आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. हम बहुत भाग्यवान है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत देश को इसमें शामिल करवाया. पूरे भारत देश में हर घर पे तिरंगा,
डीपी पे तिरंगा लगाओ, कितने ऐसे सारे इनिशिएटिव लिए, आयुष्मान भारत, आरोग्यवान भारत, स्वच्छ भारत, ये मोटो लेके हम ये आज़ादी का अमृत महोत्सव यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज का दिन सबसे पहले मैं हमारे जो चीफ गेस्ट है वो भी आर्मी से है, वो भी डिफेंस से है, मुझे बहुत आनंद है कि वो आज यहाँ पे शामिल है। उन्हें भी भारत सरकार ने विशिष्ट सेवा मेडल एंड परम विशिष्ट सेवा मेडल से उनका गौरव किया है उनके कार्य के लिए। तो हम आपका यहाँ पे स्वागत करते हैं तहे दिल से। मेजर जनरल विजय चौगुले जी, मैं आपको भी इस दिन की शुभकामनाएं देता हूँ, हर एक को शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे तो हमारे बच्चों ने इतनी अच्छी तरह से देशभक्ति के बारे में, हमारे देश के बारे में उनकी जो भावना है, उनके जो फीलिंग्स है, दे हैव कन्वेड। बट एज अ ड्यूटी बीइंग द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, मुझे भी मेरी भावना यहाँ व्यक्त करने में आनंद हो रहा है। मुझे लगता है आज का दिन तीन चार चीज़ों के बारे में, तीन चार अबाउट द थिंग्स वी हैव टू डिस्कस। पहली बात है कि हमें उनको याद करना चाहिए जिन्होंने आज़ादी के स्ट्रगल में आज़ादी मिलाने के लिए जिन सब नेता लोगों ने, सब जो हमारे किसान है, फ्रीडम फाइटर है, जिन्होंने भी देश के आज़ादी के लिए उनका बलिदान दिया, उनकी शहादत दी, ऐसे सब लोगों को आज हमें याद करना चाहिए। वही हमारा फाउंडेशन है। वो अगर नहीं होते तो आज का दिन हमें देखने के लिए मिलना मुश्किल था। मुझे लगता है हम तो हजारों साल से, 1000 साल से हमारे ऊपर परकीय शासक राज्य कर रहे थे, बट हम उतना दूर नहीं जाएंगे। 1857 में पहले क्रांतिवीर मंगल पांडे जी ने ये उठाव किया ब्रिटिशों के खिलाफ, और उस खिलाफ पूरे हमारे देश में, हिंदुस्तान में उसकी लहर उठी। तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवे, रानी लक्ष्मीबाई, कितने नाम लेंगे हम। उन सब लोगों ने उनका बलिदान देके उठाव किया, एक भावना, एक लहर, एक वेव पूरे कंट्री में पैदा की, एक प्लेटफॉर्म उन्होंने शुरू करने की उन्होंने नींव रखी। और मुझे लगता है तब से ये हमारा फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो गया ब्रिटिश लोगों के खिलाफ। 1885 में 1885 उसका रूप आ गया कि कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट हो गई, एंड थ्रू दैट प्लेटफॉर्म इंडियन कांग्रेस पार्टी, that party struggled to get the freedom for the country. Under that platform of the Indian National Congress, मुझे लगता है लोकमान्य तिलक थे, लाला लजपत राय थे, कितने थे, आगरकर थे, स्वातंत्र्य वीर सावरकर थे, कितने लोगों ने थ्रू दैट प्लेटफॉर्म ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग अलग मूवमेंट किया। साइमन वापिस जाओ, लाला लजपत राय ने वहाँ पे उनको लाठीमार झेलना पड़ा। लोकमान्य जो तिलक थे मंडाले के तुरुंग में गए, हमारी स्वतंत्रता की मांग के लिए उन्होंने बोला स्वतंत्रता ये मेरा जन्मसिद्ध हक है, दिस इज माय फंडामेंटल राइट एंड यू कैन नॉट डिनाई दैट। उनके लिए उनको मंडाले के तुरुंग में रहना पड़ा। कितने लोगों के नाम ले, यहाँ के हमारे 11th के बच्चे ने उनके नाम लिए नहीं, बट हमें पता लग रहा था कि ये जो हमारा छात्र है वो किसके बारे में बात कर रहा है। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, कितने लोग हैं 1930 के पहले उन्होंने हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। आज उनको नमन करने का दिन है, उनकी याद करने का दिन है, और उनकी शहादत को हमारे डे टू डे लाइफ में हम उनका ये ऋण कैसा अदा करें, इसके बारे में सोचने का ये दिन है। मुझे लगता है सुभाष चंद्र बोस जी है, महात्मा गांधी जी है। सुभाष चंद्र बोस जी ने तो पूरी एक फौज, उन्होंने तो आर्मी खड़ी की, हिंदुस्तानी फौज खड़ी की। वो हिटलर को मिले, क्या क्या
एक आदमी अगर कुछ डिटर्मिनेशन करता है देश के लिए, वो क्या कर सकता है, उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है स्वरा अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज इस साल हम उनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट कर रही है। ये कितने भाग्य की बात है कि आज हम ये आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी ईयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की भी ये उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, 125th बर्थ एनिवर्सरी। ऐसे कितने लोग हैं, महात्मा गांधी है, इन सब लोगों ने मुझे लगता है, और अभी एक छात्र ने उल्लेख किया आलूरी सीताराम राजू, ऐसे कितने कितने हजारों फ्रीडम फाइटर है, हजारों लाखों फ्रीडम फाइटर रहेंगे, पार्टीशन का भी। और आखिरी में हमें आज़ादी मिली पार्टीशन में, मुझे लगता है करीब करीब 10 मिलियन, 1 करोड़ के आसपास लोगों ने उनकी जान उनकी चली गई। वो जो वायलेंस हो गया उसमें इतने लोगों ने उनकी शहादत उनको देनी पड़ी। ऐसे ऐसे बड़े पेनफुल प्लेटफॉर्म पे, बैकग्राउंड पे वी गॉट द फ्रीडम इन 1947 विथ अ ग्रेट वैल्यू। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उनके खून की कुछ हम उसकी कीमत नहीं अदा कर सकते। ऐसे ये फ्रीडम फाइटर थे, सब नेता हो, सब राजा हो, किसान हो, जो भी है, महिला हो, पुरुष हो, आदिवासी हो, इन सब लोगों ने बड़ा योगदान देके भारत का ये इंडिपेंडेंस हासिल किया है। मुझे लगता है आज उसको उन्हें हमें नमन करने का दिन। तो मैं नमन करता हूँ उन सब परमवीरों को, सब फ्रीडम फाइटर को, और उनके आशीर्वाद से ही हम यहाँ पे पहुँचे हैं। मुझे लगता है आज का दिन, आज़ादी तो मिल गई, उसके बाद काफ़ी चैलेंजेस थे। मुझे लगता है हमारे देश ने गए 75 साल में काफ़ी मोमेंटस जो अचीवमेंट किए हैं। हमारे पास हमने कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उनके चेयरमैन, अंडर हिज चेयरमैनशिप, एंड वो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बेहतरीन ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन है जो मुझे लगता है हर इंडियन सिटीजन को पढ़ना चाहिए और वो अमल में लाना चाहिए। उसमें इक्वालिटी के बारे में बात की है, हर भारतीय की जो भी एस्पिरेशन है वो पूरी कैसी हो जाए उसके बारे में लिखा है। और मुझे लगता है कि यह हमारा परम कर्तव्य है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन वी हैव टू डू इट विथ ए ट्रू स्पिरिट। उसके बाद में नेहरू जी ने, मुझे लगता है जो भी नेता लोग आए, उन्होंने एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क हमारे कंट्री में खड़ा किया, डिफरेंट लैबोरेटरीज खड़ी की है, डिफरेंट पॉलिसीज अडॉप्ट किए, और उसके कारण हमारा देश स्टेप बाय स्टेप अचीवमेंट करते गया। हमारे यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन, हमारे देश में फूड का शॉर्टेज था, वी वर नॉट सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने लाया, स्वामीनाथन जी है, ऑपरेशन फ्लड, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया गया, मोरारजी देसाई हो, वर्गीस कुरियन हो, इन्होंने इसरो के माध्यम से हमने आर्यभट्ट नाम का सैटेलाइट भी लॉन्च किया 1974 में, रशिया के साथ में मिलके। मुझे लगता है मंगलयान, अभी फिलहाल रिसेंटली 2014 में हमने मंगलयान लॉन्च किया, 1991 में मनमोहन सिंह जी और नरसिंह राव जी ने एक बड़ा पॉलिसी लिया, हमारे कंट्री में फ्री इकोनॉमी किया, सो दैट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में आना शुरू हो गया। ये बहुत ही विजनरी डिसीजन था, मुझे लगता है डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरसिंह जी का। नहीं तो आज हम देख रहे हैं श्रीलंका में क्या हो रहा है, श्रीलंका में पूरा कंट्री इज क्रिपल्ड। ये so we are very thankful to both the leaders and the whole entire leaders. Prime Minister Rajiv Gandhi ji has brought the telecom movement, telecom revolution in the country. Because of that, I think every village is connected with the internet and with the telephone. I am naming the leaders because their contribution is a very noteworthy, priceless. They have seen very big vision for the country, and because of that, I think we are enjoying the luxuries, the prosperity today. Without them, without their vision, we could not have
done this, we could not have come to this stage. मुझे लगता है ये सब जितने भी नाम हम लेना चाहेंगे उतने कम है. पूरे लोगों के तो मैं नाम यहाँ पे नहीं ले सकता, बट उनके कुछ लोगों के तो नाम लेने चाहिए. और ऐसे नेता, ऐसे साइंटिस्ट, डॉक्टर विजय भटकर जी ने हमारे देश के लिए सुपर कंप्यूटर बनाया. डॉक्टर माशेलकर जी ने बासमती राइस के लिए उसका पेटेंटिंग न होना चाहिए, इसलिए वर्ल्ड लेवल पे उन्होंने फाइट किया. हल्दी के लिए भी उन्होंने फाइट किया. ऐसे कितने लोग हैं. सारा भाई ये एटॉमिक मिशन, एटॉमिक एनर्जी के लिए हमारे देश में हमारे साइंटिस्ट ने एक नींव रखी. एंड टुडे वी आर, हमले अभी न्यूक्लियर बॉम्ब एनेबल्ड हमारी कंट्री है. पहले जब 1978 में हमने इसका ये किया, टेस्ट किया, सो इंडिया वाज ओनली 6th कंट्री. एंड आज भी हमारे पास we are very defense enabled, we are very tactically enabled in for the defense of our country. So people are they are very careful about us. तो मुझे लगता है हर सेक्टर में, साइंस सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, हर सेक्टर में ये हमारे देश ने जो अचीवमेंट की है, that is really noteworthy. It is a reflection of the hard work, it is a reflection of the ideas, it is a reflection of the innovation of each and every Indian which has brought this country to the level. आज का दिन उसके सेलिब्रेशन का ये दिन है. ऐसे मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे देश में बहुत बड़ी क्रांति हुई है. आज हर आदमी को, हर युवा को उसके पसंद की शिक्षा यहाँ पे उपलब्ध है, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है. ऐसे काफी उपलब्धियों के साथ हमारा देश आज यहाँ पे आया है. हम भाग्यवान है कि गए 6-8 साल में, 10 साल में जो भी पॉलिसीज हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिफरेंट गवर्नमेंट्स आर टेकिंग, बिकॉज ऑफ दैट इंडिया इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज वेरी अपकमिंग सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड. और इसके लिए पूरे जो भी है हमारे पॉलिटिकल लीडर, साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर्स, they are very committed, and I'm very happy that India is leading on the journey of becoming very much superpower of the world. Not in that sense of the superpower, but अच्छे के लिए इंडिया का एक नाम पूरे दुनिया में हो रहा है. ये बहुत गर्व की बात है, और मुझे लगता है ये बहुत important है, because the dream which was seen by our forefathers, the founders of the country, we are trying to fulfill that. और यहाँ पे इक्वालिटी से हर एक को उसका लाइफ, he can live the life, ये उनकी मिशन थी. तो इसके माध्यम से ये पूरी हो जाएगी, ऐसे मुझे उम्मीद है. मुझे लगता है आज का दिन हमें ये भी आगे के लिए what we have to resolve for the future, ये सोचने का भी आज का दिन है. एक छात्र ने यहाँ पे बोला, everyone can contribute in the development. आज़ादी को मेंटेन तो करना है, बट हमें ये भी तय करना है कि जो वी हैव टू मेक आवर कंट्री आत्मनिर्भर. वी शुड नॉट लैंड अप इनटू एनी प्रॉब्लम, वी शुड नॉट फेस एनी the political crisis, economical crisis in the future. For that, each and every citizen of the country has to work dedicatedly with innovation, and how we can do that is up to is a big challenge. But I'm very happy that the new India, the youth of new India, they are taking up the challenge before this country, and they are trying to find the new and new solutions for the very bright India. And with this hope, once again, I wish, wonderful, I wish all of you on the Azadi ka Amrit Mahotsav. And with these words, I salute to our country. Vande Mataram, Jai Jawan, Jai Kisan, Bharat Mata ki Jai. Dhanyavad. Thank you, sir, for your insightful advice and for your constant guidance and support. I now request our Honorable Chief Guest, Major General V.D. Tsaugole, sir, to come up on the dais and express his enlightening thoughts.
Professor Dr. Mangesh Karad, Mrs. Karad, Pro Vice Chancellor Professor Anand Chakradev, Dr. Pujari, Director Student Affairs, and Principal Manet Professor Subodh Degaonkar, parents and dear students who are all assembled here, I congratulate you all on the 75th Independence Day, the Azadi ka Amrit Mahotsav. And I once again thank the management of MIT-ADT led by Professor Mangesh Karad for extending this honor and privilege to me to be the chief guest here and have a look at this wonderful university at close hand. The patriotic fervor which was displayed by all the cadets, students, children, and everybody present here actually takes me back to my old school and college days, and it fills me with great amount of feeling towards this country and thinking that we are blessed to be born and to be citizens of this country. I find that this place has students and faculty from all over India, and it is like our country, a melting pot, a microcosm of the entire country where each and every religion, caste and state is represented. It gives me immense pleasure to be amongst you here today, as just a few years back, I was also heading an institution, the Officers Training Academy in Chennai, where young boys and girls like you train and pass out as officers to join the Indian Army. I find the same kind of excitement and exhilaration which I then experienced by being here amongst you youngsters. कुछ देर पहले जैसे डॉक्टर मंगेश कराड़ जी ने कहा है, उन्होंने 1857 से लेकर के 1947 तक और उसके बाद आज की तारीख तक पूरा एक ब्यौरा दिया है कि किस तरह हमारे देश ने प्रगति की है और किस तरह हमने हमेशा आगे का कदम रखा हुआ है और किस तरह हमारे पूर्वजों ने ये आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और किस तरह उनकी शहादत की वजह से, उनके जो सैक्रिफाइसेस थे उसकी वजह से आज हम एक आज़ाद देश है। लेकिन मैं इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आज़ादी हमें मिली है, हम अभी जाकर के आज़ादी के लिए लड़ नहीं सकते, लेकिन इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, इस आज़ादी को बढ़ाने के लिए, इस आज़ादी को निरंतर रखने के लिए हमें कुछ करना चाहिए जो आज की पीढ़ी ने करना है। सिर्फ पुराने हमारे जो पूर्वज हैं उनके काम को याद करते हुए और हम कुछ ना करें, ये बात ठीक नहीं है। हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हमारा देश का नाम बढ़ सके, हमारा खुद का नाम बढ़ सके, हमारे जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने कितनी मेहनत से आपको यहाँ भेजा है उनका नाम रोशन कर सके। आप लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो कि बहुत लकी है आपके लिए। आप सब लोगों ने सुना होगा या जिसने नहीं सुना है वो जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं कि इंडिया जो है डेमोक्रेटिक डिविडेंड से गुजर रहा है, यानी कि दुनिया का सबसे यंग देश
दुनिया के सबसे यंग पीपल, यंग लोग हमारे देश में मौजूद हैं। और जितने ज़्यादा यंग लोग एक देश में अवेलेबल हैं, उतना ज़्यादा देश तरक्की कर सकता है, क्योंकि उतने ज़्यादा कमाने वाले हैं, उतने ज़्यादा टैक्स पेयर्स हैं, उतना ज़्यादा सरकार का खजाना भरता है, और उससे सरकार जो है अपना सिक्योरिटी और अपनी उन्नति कर सकती है। तो हम लोग ऐसे दौर में हो, हम लोग की बजाय, हमारा तो टाइम निकल गया है, लेकिन आप जो यंग लोग हैं यहाँ पे, ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो मैक्सिमम फायदा है आप उठा सकते हैं। और अगर आप सरकार का भी प्रयास देखें तो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, डिजिटल इंडिया और जितने सारे उन्होंने मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भरता, जितने सारे प्रोग्राम जो चलाए हैं वो सिर्फ इसलिए चलाए हैं कि आप जैसे यंग लोग जो हैं वो एजुकेशन पा सके और एजुकेशन पा करके जाके समाज में अपना नाम कमा सकें और देश का, अपना और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सके। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ऑफ विजय में, जिसका आप ये लोग दिखा रहे थे प्रोग्राम, उसमें हिस्सा लिया है। बहुत सारे मेरे कलीग्स की, मेरे फ्रेंड्स की, उन्होंने अपने इस देश के लिए जान दी है। लेकिन हर कोई आदमी देश के लिए लड़ नहीं सकता, हर कोई आदमी देश के लिए अपनी जान नहीं दे सकता है। लेकिन फिर भी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं ताकि इस देश की तरक्की हो सके, ताकि देश आगे बढ़ सके। तो ये कैसे हो सकता है संभव? ये अगर आप अपना काम करें, अगर अपने गवर्नमेंट के ऊपर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, अपने टीचर्स के ऊपर, अपने जहाँ पे भी जाके आप अभी काम करोगे उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अगर आप विश्वास करें, आप ट्रस्ट करें और अपना लगन से काम करें, तो आपने इस देश की आज़ादी को बनाए रखने के लिए या निरंतर रखने के लिए या उसको बरकरार रखने के लिए आपने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ये ऐसा होगा। अगर आप आपस में लड़ाई करेंगे रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, तो फिर ये संभव नहीं है। अगर आप सब लोग अच्छे सिटीजन बन जाएंगे तो ये देश को उन्नत होने से कोई नहीं रोक सकता। आप सब लोग खुश नसीब हैं, क्योंकि एक जो सबसे पहली बात तो आप सब एम्बिशियस हैं, यानी कि महत्वाकांक्षी है, इसलिए आप कॉलेज में आए हैं, आपके पेरेंट्स ने यहाँ आपको भेजा है, आप एक बढ़िया इंस्टीट्यूट में यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने, जैसे मेरा इंट्रोडक्शन दिया गया था, मैं खुद 3 यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ और मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ फॉरेन में भी देखी हैं। लेकिन जैसे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने पाया है, जैसे देखा है, ये एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक वर्ल्ड क्लास फैकल्टी है, एक वर्ल्ड क्लास एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सपोर्ट स्टाफ यहाँ काम कर रहा है, सब ऊंचे दर्जे का है। आपको सिर्फ अपना पढ़ाई अच्छे से करना है और अपना काम अच्छे से करना है, एक उत्तम नागरिक बनना है और विश्वास के साथ काम करेंगे तो आप जरूर तरक्की करेंगे। आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक जीती जागती यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो। जीती जागती यूनिवर्सिटी में इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आदमी काम कर रहे हैं, फैकल्टी है, बिल्डिंगें हैं। तो मेरी आपसे एक ही सलाह है कि इस यूनिवर्सिटी का फायदा उठाओ, नहीं तो आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ट्विटर यूनिवर्सिटी, इसके ऊपर लोग बड़ा निर्भर रहते हैं कि व्हाट्सएप में क्या आया है, ट्विटर में क्या आया है। इसलिए आपको उसके ऊपर इतना ध्यान न देते हुए आपको इस जीती जागती यूनिवर्सिटी का आपको फायदा उठाना चाहिए। और
यहाँ से अच्छे अच्छे से सिखलाई पा करके आप दुनिया में कदम रख सकते हैं। डॉक्टर मंगेशकर कराड़ जी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि 75 साल में हमने काफी तरक्की की है। कई बार हम अपने आप को देखकर ये महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे को देखते हैं कि क्या हुआ, क्या किया है हमने 75 सालों में। लेकिन जब आप दुनिया को देखते हैं, नज़दीक के देशों को देखते हैं, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, तब आपको महसूस होगा कि भारत देश और इन देशों में कितना अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग आत्मनिर्भर है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है, और इसकी वजह यह है कि हमारे पूर्वजों ने जो काम किया है और जो सरकार आज काम कर रही है, ये सारा उसी लिए काम कर रही है ताकि हम लोग प्रगति कर सके। कुछ महीने पहले ये एग्जाम्पल दिया जाता था कि पाकिस्तान में पेट्रोल हिंदुस्तान से आधे दाम पर है, श्रीलंका में पेट्रोल हिंदुस्तान से आधे दाम पर है, या बांग्लादेश में पेट्रोल आधे दाम पर है। तो वो आधे दाम पर इसलिए पेट्रोल था क्योंकि जो है सरकार के पास वो उनको फ्री में दे रही थी। लेकिन ये कुछ महीनों के लिए चल सकता है। जितना ज़्यादा इसको चलाने की कोशिश करेंगे तो आप सब लोगों ने देखा है कि उन देशों का क्या हाल हुआ है। कभी कभी बुरे डिसीजन भी सरकार को लेने पड़ते हैं, और हर एक चीज़ के लिए सरकार को या एडमिनिस्ट्रेशन को या अपने यूनिवर्सिटी को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग, आपका जो जोश यहाँ पर देख करके, आपका जो लगन है और आपका जो भारत माता की तरफ के जो प्यार है, इसको देख करके मुझे यकीन है कि आप लोग इस समाज में और दुनिया में सक्सेसफुल एक कदम रखेंगे और हम सबका नाम रोशन करेंगे। Once again, I thank Dr. Mangesh Karad and his entire team for inviting me to this function and giving me an opportunity to soak in the patriotic fervor and be part of these wonderful celebrations of Azadi ka Amrit Mahotsav. Once again, I congratulate you all on the 75th anniversary of Independence Day. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir, for that enlightening and inspiring speech. We are indeed honored and delighted to have you here. Sir, as rightly said by you, that it is our duty as the youth of our nation to keep up with the responsibilities that comes with freedom. We have now come to the end of our program, and thus I would like to call upon Cadet Ananya Deep to deliver the vote of thanks. Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all the others. Good morning, everyone. I deem it my proud privilege to stand before you to place on record the contribution of every noble heart towards the success of this glorious and memorable occasion. Today, our emotions speak louder than any words to express our gratitude towards our nation. On behalf of MIT-ADT University, I would like to thank our Honorable Chief Guest, Major General V.D. Chaugule, PVSM, VSM, who has graced us with this presence and encouraged the students of our university.
A heartfelt thank you to our Honorable Professor Dr. Mangesh Karad sir and Professor Dr. Sunita Karad ma'am for gracing this occasion with their warm presence. It gives us immense pride to extend our heartfelt regard to our dignitaries on and off the dais, honorable principals and deans, HODs of various institutes, and the faculty members of MIT-ADT University who have supported and guided us throughout our journey. We have been fortunate enough to be backed by a striving team of our very creative and motivating organizing committee from MANET, which includes our principal, Mr. Subodh Gaonkar sir, cultural committee, faculty members, cadets, and ever cooperating staff. A special thank you goes to our very own parade instructor, N.S. Thorat sir, and band instructor, Sher Bahadur Thapa sir, who have put exceptional efforts into the cadets to present us with a spectacular display of the Guard of Honor. We would also like to express our deep sense of thankfulness to the participants from various institutes of the Rajbog campus who contributed to such a magnificent event. A big thank you to the parents, staff members of MIT-ADT University, and media for their presence today. This event wouldn't have been as majestic as it was without the encouragement of our cheerful audience. Thank you everyone for being here, and we would like to take your leave with a beholden heart. Jai Hind, Jai Bharat. It is a kind request to everybody to please visit the final day of poster exhibition, which is organized by MIT School of Fine Arts and Applied Arts. The venue is at Vishwaraj Studio, SFT building. A huge round of applause. Now, we would like to announce that there are refreshments arranged for all the staff at MIT-ADT University. For our respected guests, deans, directors, and head of institutes, it is arranged on the first floor of Manet Mess.
we would like to invite all the admin officers of the respective institutes to collect the refreshments from Manet Library, first floor. I request all the Manet faculty to please come up on the stage and join for the group photograph. The audience can now proceed for breakfast. It's a kind request for all the audience members to please proceed for the refreshments.